देखो, इसने हमसे पूछा था इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल। इसका होगा फॉस्फोरस साइकिल। और 2018 में पूछा था विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल drastically reduce its water holding capacity. The high content of organic matter in soil reduces water. नहीं, गलत है ये। Soil does not play, ये तो पूरा ही गलत है। Irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural lands. ये ठीक है। High content of organic matter, एक क्या कहते हैं, तीन है, तीन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसका, है ना। कार्बन साइकिल और का फोटोसिंथेसिस पोटैटो रेस्पिरेशन देखिए अबव द एड एड कार्बन को कम करता है ना, रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन होगा डिके ऑफ ऑर्गेनिक, और ये होगा और वॉल्केनिक एक्शन होगा। ठीक है। Since the question used the word weathering of the rock as a source of release nutrients, option A and D eliminated, as they both are gases, gas, carbon and sulfur. ठीक है, तो ये भी ठीक है। Arriving at 50-50 solution, for getting the right answer, we need to know the sulfur cycle is most sedimentary. It is mostly sedimentary, but two of its compound hydrogen sulfide and sulfur sulfide are gases, while phosphorus does not have any gaseous compound. So the phosphorus cycle is the most logical choice. ठीक है। Based on the nature of reservoir, there are two types of cycles. Gaseous cycle, where the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere. Water, carbon and nitrogen. Water, carbon and nitrogen. Sedimentary cycle, where the reservoir is the earth crust. Phosphorus, calcium, magnesium, sulfur. Phosphorus moves in a cycle through rock, water, soil, sediments and organisms. Rock, water, soil, sediment and organism. Over time, rain, weathering, mining, leaching. Over time, rain, mining with leaching. Rain, weathering, mining, leaching cause rock to release phosphate ions and other minerals. This organic phosphate, inorganic phosphate is most is in distributed in soil and water. Carbon cycle, reservoir carbon cycle का atmosphere, ocean, dissolve dissolve CO2 carbonate, ये दिक्कत है। Dissolve CO2 carbonate, terrestrial biosphere, biomass and soil और organic matter। lithosphere में है fossil fuel, limestone and sediment। फोटो अब पाथवे कैसे निकलती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबंशन, ओशियन अपटेक, रिलीज। ये जब ठंडे होते हैं, जब ठंडे होते हैं, जब वो ज्यादा करते हैं, और वो तो वहां से वो तो लेते ही नहीं जानवर। और सेडिमेंटेशन। ठीक है। ओशियन अपटेक थोड़ा वैसा है। ओशियन अपटेक एंड सेडिमेंटेशन। नाइट्रोजन साइकिल, रिजर्वायर, एटमॉस्फेयर, सॉइल। कार्बन सॉइल में नहीं, ऐसे सॉइल में ही तो है। ये भी सॉइल में भी है। नाइट्रोजन में N2 नाइट्रोजन, और सॉइल में अमोनिया अमोनिया नाइट्रेट एंड अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। प्लांट्स एंड एनिमल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। वाटर बॉडीज dissolve नाइट्रोजन कंपाउंड।
निकलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, अमोनिफिकेशन से, नाइट्रिफिकेशन से, डेंट्रिफिकेशन से और एसिमिलेशन से और लीचिंग से। ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, रिजर्वायर, रिजर्वायर, रॉक, 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 सॉइल, वाटर बॉडीज में है डिजॉल्व फॉस्फेट, सॉइल में फॉस्फेट आयन है, रॉक में एपोटाइट, एपोटाइट मिनरल है, ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी। वेदरिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन, एसिमिलेशन बाय प्लांट, कंजम्पशन बाय एनिमल एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है। सल्फर, सल्फर साइकिल, रिजर्वायर है ना, लिथोस्फीयर में है, सबसे पहले मेरे ख्याल से लिथोस्फीयर में ही है। पेराइट्स एंड जिप्सम, ओशियन सल्फेट, एटमॉस्फेयर SO2, SO2, H2S, बायोमास प्रोटीन एंजाइम, pathway volcanic emission, weathering of rock, assimilation by plant, decomposition, bacterial reduction, sulfate to hydrogen sulfide, and oxidation, hydrogen sulfide to sulfate. And human induced alteration in nitrogen cycle, fertilizer, synthesization, fossil fuel combustion, release nitrogen oxide, contributing to acetone and fossil fuel, nitrous oxide, contributing to acid rain, output for example, reduce nitrogen uptake by plants, increase nitrogen runoff, and soil level. Increase animation in man-made organisms, leading to atmospheric nitrogen deposits. Industrial labor cost, excessive ammonia, nitrogen, excessive ammonia in soil. Bio wastewater discharge excess nitrogen into water bodies, disrupting aquatic ecosystem. Sewage water, methane, natural wetland, methane sink atmospheric, ठीक है, methane तो ऊपर कराया भी नहीं था। पहले ये आते हैं सल्फर साइकिल एंड इज लिंक्ड टू acid rain formation. Sulfur source, volcanic eruption, H2O, H2, oceanic emission, oceanic emission, है ना, इसे बोलते हैं डिमिथाइल सल्फर सल्फाइड। वेदरिंग ऑफ सल्फेट रॉक, बायोलॉजिकल डिके, एंथ्रोपोलॉजी, फोसिल फ्यूल में सल्फर निकलता है, स्मेल्टिंग ऑफ सल्फाइड और
industrial process, pathways, sulfur oxidation, hydrogen sulfide, oxide to sulfur oxide in the atmosphere, hydrogen sulfide, oxide to sulfur dioxide in the atmosphere, sulfur formation, H2O reacts the atmospheric water to form sulfuric acid leading acid deposition, acid rate formation, H2O and H2O react with water vapor, producing sulfuric and nitric acid, H2O, H2O and water vapor, producing sulfur and nitric acid. Acid rain pH पीएच 65.6 से ज़्यादा होता है इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी वेस्ट वाटर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना environmental impact soil acidification reduce nutrient level and harsh vegetation at alter pH level water bodies losing its motility or weakness of weed making especially to disease and climate stress ये ठीक है ना cultural and structural damage to roads metal limestone and marble spaces ठीक है mitigation strategy fuel gas desulfurization catalyst converter, catalyst converter, renewable source, low sulfur fuel, clean energy act, international sulfur emission, yeah, clean air act, and renewable source, fuel, water, sulfur and nitric acid, sulfuric and nitric acid, sulfuric and nitric acid, sulfur dioxide, and, and nitrogen oxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide, water vapor, water, nitrogen. Methane cycle and contribution to global warming. Methane contribution to methane is a potent greenhouse gas contributor to warming potentially to short-lived but high impact persistence in atmosphere and fuel years. Contributing tropospheric zone formation. Tropospheric zone formation further amplifying warming effects. Tropospheric zone natural stored wetland anaerobic anaerobic decomposition. Terminate termite Zert microbes, oceans, methanogenesis, methanogenesis in the sediment, anthropogenic livestock and fermentation, rice studies, anaerobic condition, landfill, organic waste decomposition, fossil fuel extraction, methane leak, creating biomass burning, methane sinks, atmospheric oxidation, methane reacts with hydrolyzed and hydro fuel. Methane reacts with hydrogen radicals from CO2 and soil uptake, methanotrophic bacteria in soil expansion, impure